हेलो फ्रेंड, आज हम लोग 16 जुलाई 2021 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे द हिंदू का। पहला आर्टिकल से और टर्निंग पॉइंट लाइकली इन स्नेक बाइट ट्रीटमेंट। फिर सेकंड ऐप विल रश स्नेक रेस्क्यूअर टू द स्पॉट। फिर थर्ड है तुम्हारा इमीडिएट स्टेप्स आफ्टर बाइट्स एंड क्रूशियल सेज एक्सपर्ट्स। फोर्थ है इंटरफेरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफिसर्स कैन डू विदाउट। फिर फिफ्थ है तुम्हारा जयशंकर वांग डिफर्स ऑन वे फॉरवर्ड ऑफ इंडिया चाइना टैक्स। फिर उसके बाद एंडिंग ऑफ इम्पेसेस। सेवेंथ है गवर्नमेंट किक स्टार्ट LIC IPO प्रोसेस। एट है तुम्हारा सिंपल ड्रोन रश इन द ऑफरिंग। फिर तुम्हारा AP to give a 10% quota for कापूस in government post service। 10th है तुम्हारा सरकार से समृद्धि another ring well found at Keladi alert as a Kerala capital report 28 Zika cases। Leopard dies after getting trapped in a snare in the नीलगिरी। फिर उसके बाद प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फिर तो पहला आर्टिकल से टर्निंग पॉइंट लाइकली इन स्नेक बाइट ट्रीटमेंट्स। सो स्नेक बाइट जो कि स्नेक अकाउंट्स फॉर द अराउंड 58,000 डेथ पर ईयर इन द कंट्री एनुअली। स्नेक बाइट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है। Fatality of snake bites of over 100 snake bite, approx 65 are non-venomous होता है, ठीक है। Half of the remaining 35 are dry bites, ठीक है। Venom snakes bites without actually injecting the venoms. Only 15 to 70% of the bites result in venoming, ठीक है। ऑकरिंग क्या होता है एट देयर वर्क साइट्स, फील्ड, प्लांटेशंस, सॉमिल, ब्रिक्स, किन्स, पोएट्री फार्म्स, ये सब पे जगह पे मिलता है स्नेक्स, ठीक है। मोस्टली इन द विलेज इन द इंडिविजुअल बिटवीन द 20 to 60 years of age pick immediately after the onset of the monsoon. Snake delivers in July, September. Juveniles snake could be the common. Then post bite management क्या है? People become anxious, जो कि नहीं होना चाहिए। Anxiety increase the absorption of the venom, ठीक है। And फिर calm down होना चाहिए, ठीक है। Keep bitten limb dependence below the level of the heart, ठीक है। जो भी जहाँ पर हाथ में काटा है तो वो नीचे झुका के रखो, या पैर में काटा है तो वो नीचे रखो, मतलब हाथ तक खून नहीं पहुँचना चाहिए। नेवर कट और सक द बिटन पार्ट, जैसे मूवी में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं करना। नेवर टाइट लिगेचर्स और टॉनिक्स, जैसे कि टाइट करके बांध देना, वो सब नहीं होना चाहिए। रश टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम लेना चाहिए, ठीक है। पॉलीवैलेंट एंटी वेनम जो कि कॉकटेल ऑफ 4 फॉर्म्स है। रसल वाइपर, कॉमन कैट, कोबरा एंड स्केल वाइपर्स। possibilities of a severe side effect to minimize the side effect. Monovalent antivenoms need to be administered. We sense जो कि to identify the exact venom in the blood. Function like a glucometry, glucometers. A drop of blood can detect the venoms in the blood. Business startups that is tied up
with the Sri Chitra Tribunal Institutes for Medical Science and Technology monitors their involvement. Prevention क्या है कि keep the house clean and devoid of a rat, chicken chicken away from the house रखना चाहिए. Use of flashlight, footwear at night पहनना चाहिए. Well tucked mosquito net करना चाहिए. ठीक है. Don't stack firewood against the wall of the house. ठीक है. केरला में एक ऐप है जो कि सरपा ऐप है, जहाँ पर फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने पर वहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगा और उसको लेके जाएगा. ठीक है. तो एक मेंस का जस्ट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. द NCBI अप्रो reports approximately 58,000 deaths from a snake bite annually in India. In this context, discuss the post-bite management in India and the challenges. The next article है about the interference and investigating officers can do without. इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है. GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. द फंक्शन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द जुडिशियल. तो पुलिस ब्रूटलिटी जो कि क्रूअल डेथ ऑफ ग्रेग फ्लोइड जो कि पुलिस ब्रूटलिटी के कारण हुआ था. फिर उसके बाद सतनकुलम जो कि तमिलनाडु में फादर एंड सन died due to police brutality. Widened the distrust between the police and the people. Honest police face many hurdles and restrictions while investigating a crime. Judicial interference क्या है कि judicial system increases its interference in the working of the police due to the distress against the observations of the Supreme Court of India. Court have no authorities to direct an investigating officer to in turns direct the arrest of any particular individual connected with the crime. Many instances subordinates judicial officers have directed the investigating officers to effect the arrest of a particular individual who has come to adverse notice as a suspects in the commission of a crime. Many instances of a court blind police officer. Why is it wrong? Against the root of our criminal justice ethics, basic principle of innocence unless proven guilty. Against these basic principles, harmful to the police morals and affect the efficiency of the investigations. Widen the distrust between the police and the people. Shows our judicial system lack faith and questions the integrity of our police systems. Affect the thinking capacities of our police officers. Code of the criminal procedure जो कि power to make decisions like arrest and search is sufficient discretions. ठीक है. Court interferes in the day-to-day investigations, not only undesirable, but it also not sanctioned by law. Police well-established hierarchy that is obligated to ensure objectivity during the criminal investigation. Every investigation supervised by the at least two immediate senior officers. Duty of the supervisor officers to ensure that every investigation is handled lawful and impartially. Only when supervisor officers failed in their duties,
because of the incomplete or external pressures deserve to be pulled up by court. Check on police misconduct. First, information report FIR. UK executives and common men should be made aware of the FIR. Mandatory is that every police station should register ठीक है रजिस्टर्ड कंप्लेन FIR तो रजिस्टर होना ही चाहिए. तो कंक्लूजन क्या है कि many dishonest police officers sabotage the investigations to save an offenders for monetary considerations does not mean all police officers are corrupt. Interference in the police investigations doesn't seem justified. अब इससे रिलेटेड मेंस में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है तो इंटरफेरेंस ऑफ द जुडिशरी इन द पुलिस इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन द राइज. Discuss the implications of such interference. Next article about the Jaishankar Wang differ on the way forward for the India-China ties. इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडिया एंड इट्स नेवर relation bilaterals groupings and agreements involving India. न्यूज़ क्या है कि member of Shanghai Cooperation Organization meet in the Dushanbe, Tajikistan. ठीक है. Meeting between the External Affairs Minister of India and the Chinese counterpart organized border issues. One of the major subject of disputes for India tends any bilateral and bilateral talks. Peaceful borders is crucial for India in order to involve the socio-economic conditions. India is trying to settle the border dispute with its neighboring countries. Focus on the recent border issues between the India and China, western sector of the इंडिया चाइना बॉर्डर्स. इंडिया चाइना वॉर जो कि 1962 में हुआ था. इंडिया एंड द चाइना हैव फॉट अ वॉर इन 1962 जो कि इंडिया सफर द ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स. serious setbacks in a bilateral relation between the India and China. Disengage in any relation between the two countries till the year 1988. Later, India and China began to engage the maintenance of peace and tranquility in the border area became the foundation of the developments of the ties. Recent issue में क्या हुआ कि relation between the India and China have been worsening in a recent month. Became evident that two world powers compete against each other along their disputed borders in the Himalayan regions. Galwan Valley incidents जो कि happened in year 2020. Clash was on the line of actual controls. Troops clash on a ridge at nearly 40,000 feet high along steep trains. After further escalations, nearly 20 Indian soldiers lost their lives. The first fatal confrontations between the two sides since 1975. China began to occupy the regions along the line of actual controls. Areas such as Dipsang, Demchok, Gogara, Hot Springs. ठीक है. गलवान रीजन, सियाचिन. ठीक है. तो बोल रहा है इंडिया चाइना मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर ऑफ द इंडिया reiterated India view continued deadlock along the LSC. Visible impact the relationship in the negative manners. China response called both sides to place border issues in an appropriate positions. Create a favorable conditions for resolving difference through negotiations. Responsibility does not lie with the Chinese side for LAC crisis. External Affairs Minister of India
Engagements in the Pangaean Lake area creates a condition for resolving the remaining issues. Mr. Wang did not refer to any remaining issues. Overall situation in the border area accelerated as the frontier troops disengage. China ready to find a solution except to both sides through negotiation and consultation. Conclusion क्या है? Without resolving the border issues, India and China cannot put the distrust of the past behind. बोर्ड जीएस पेपर में जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉर्डर इशू हैज़ बीन अ प्राइमरी कॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड चाइना डिस्कस. अब नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द गवर्नमेंट किक स्टार्ट LIC IPO प्रोसेस. अब क्या न्यूज़ है कि द गवर्नमेंट बिगेन द प्रोसेस ऑफ LIC डिसइन्वेस्टमेंट invite bids proposed mega initial public offering. Public issues entity makes an issues or offer of a share to the new investor for becoming part of the shareholders families classified into the initial public offerings and further public offerings. Initial public offering क्या होता है? Unlisted company जब make fresh issues of share or convertible security for the first times in the public. Unlisted company offer its existing share or convertible securities for the sales for the first time to the public. Later on pave way for listing and trading of the issuer shares and convertible securities on the stock exchange. Public बोल रहा है कि means it has offered its shares to the public at large. It is ready to get listed at the stock exchange of the countries. IPOs जो कि regulated under the provision of the Securities and the Exchange Board of the India Regulations 2018 and Company Act 2013. ठीक है. अब फर्दर पब्लिक ऑफर क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी makes either a fresh issues of share or convertible security to the public or an offer or sales to the public or followed up public offers is the issuance of the shares after the company is listed on the stock exchange. Listed companies refer to the companies having any of its securities listed to any recognized stock exchange. अब इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि विथ रेफरेंस टू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग consider the following statement. Initial public offering refers to the fresh issues of shares or convertible securities for the first time to the public by the listed company. Unlisted company करता है. जब लिस्टेड कंपनी है तब फिर उसको इनिशियल ऑफरिंग क्या करना है, उसको तो पहले से हुआ होगा. ठीक है. इट इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द RBI एक्ट ऑफ 1934. नहीं, ये सेबी रेगुलेट करता है इसको. ठीक है, सेबी रेगुलेट करता है. नेक्स्ट आर्टिकल्स है कि आर्टिकल्स है अबाउट द सिंपल ड्रोन रूल इन द ऑफरिंग. ठीक है, तो ड्राफ्ट ड्रोन रूल 2021 जो कि ड्रोन विदाउट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट अनलेस exempted. Drone operations generates a unique identification numbers by providing a requested detail on the digital sky platform. Digital sky platform क्या है कि initiated by the Ministry of Civil Aviation. सिविल एविएशन के द्वारा किया गया है. Provide a secure and a scalable platform that
Support drone technology framework enables flight permission digitally and manage unmanned aircraft operations and traffic efficiently. Developed by the business friendly single window online systems with a minimum human interference and most permissions will be self generated. Included many new safety features, real-time trackings, beacons, and geofencing. Geofencing use technology like GPS and or RFID to create virtual geographic boundaries, enable the software to triggers a response. Drones enter or leave particular areas. Interactive airspace map with green, yellow, and red zones displayed on the digital sky platforms. No pilot license. Micro drones used for non-commercial use. No pilot license. Nano drones used by the research and development R research and development organization. No restriction on drone operations by the foreign owned company restricted in India. ठीक है, foreign owned company restricted in India को मैं नहीं वो no pilot license nano drones used by the research and developments. ठीक है. The importance of the drones and drone components regulates by the DGFT. No security clearance required before any registration and license issuance of our drones. Increase the coverage zone of 300 kg to 500 kg our drone taxes. ठीक है. फिर उसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन कॉरिडोर फॉर द कार्गो डिलीवरीज. ड्रोन promotes conditions business friendly regulatory regimes. फिर इससे रिलेटेड प्रीलिम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंसिडर फॉलोइंग एक्टिविटी sparing pesticides to the crop fields, inspecting the creators of active volcano, collecting the breathing sample of the sporting whale for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be useful carry out using the drones? तो सारा D हो जाएगा. The next article है about the AP to give the 10% quota for कापूस इन अ गवर्नमेंट पोस्ट सर्विस. तो न्यूज़ क्या है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन फॉर द कापूस कम्युनिटी एंड ऑल्सो फॉर द अदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शंस इनिशियल पोस्ट और सर्विस इन द स्टेट गवर्नमेंट डन्स इन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक रिजर्वेशन अमेंडमेंट आर्टिकल्स 15 एंड 16 को अमेंड किया गया. ठीक है, इंसर्टिंग द 15(6) एंड 16(6) allows the reservations for the economically backward in the reservation unreserved category. ठीक है. अब कापूस क्या है कि प्राइमरली एग्रियन कम्युनिटी बेस्ड ऑन द आंध्र तेलंगाना रीजन, वन अमंग द डोमिनेंट कास्ट ग्रुप विथ अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कंप्राइज ऑफ नियरली 26% ऑफ द स्टेट 5 करोड़ पीपल. सोर्स क्या है कि ओरिजिनल कल्टिवेटर कास्ट है हु माइग्रेटेड फ्रॉम गंजेटिक प्लेन्स, migrations of the Telangana and settled onto the farming region of a heavy concentration of Kapus along the Godavari down and into the Andhra area. ठीक है. गवर्नमेंट ऑपरेशनल गाइडलाइंस से implies the 10% reservation.
ठीक है, टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब अनदर रिंग्स वेल फाउंड इन केलाडी, केलाडी में एक रिंग वेल फिजिका वायरस जो कि एडिज एजिप्टिस मच्छर से होते हैं, केरला में बहुत फैल रहा है। फिर लेपर्ड डाइज आफ्टर गेटिंग ट्रैप्ड इन स्नेयर्स इन द नीलगिरी। ठीक है, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो वही है ड्रोन का यूज प्रॉपर पेस्टिसाइड छिड़कने में यूज़ हो जा सकता है, वोल्केनिक से सैंपल लेने में और स्पॉटिंग वेल का डीएनए लेने में यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो कि अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फेस शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को किया जाता है ऑफर। फिर इट इज रेगुलेटेड बाय द सेबी के द्वारा रेगुलेट होता है। और मेंस में क्वेश्चन हो सकता है कि एनसीबीआई report approximately 8,000 deaths from the snakes annually in India and context of discuss the post-bite management in India। फिर जुडिशरी पुलिस में इंटरफेयर कर रहा है, ये कितना तक सही है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि बॉर्डर इश्यूज हैज बीन प्राइमरी कॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडिया एंड चाइना डिस्कस। ठीक है,